पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने आपको ढेर सारे अंक दिए होंगे, दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने आपको अंक दिए होंगे, तीसरे टेस्ट मैच में आपको क्या पिक करना चाहिए ये हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं दिस इज माय 11 सर्कल फैंटेसी पिक ऑन ESPN Cricinfo। Right then, joining me on this program is Darren Ganga, who may agree or disagree with our pick, but we'll tell you our picks anyway. We'll start with the pro tip. Pro tip हम आपको ये बता रहे हैं कि 4 और टेस्ट मैच शेड्यूल्ड हैं इंग्लैंड के अभी कुछ ही समय बाद, तो आपको उनके पेस अटैक में काफी चेंजेस देखने को मिलेंगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ फिल सिमंस ने भी कहा है कि वो अपनी वेस्ट इंडीज टीम के टॉप ऑर्डर में कुछ फेरबदल करेंगे, ये चीजें ध्यान रखिए और तभी अपने टीम का चुनाव करेगा। So that was the pro tip we've given our viewers, Darren, about England making changes to their fast bowlers, West Indies to their top order. Any new names you'd like to see apart from the ones that we've been seeing in the 2 tests that can make an appearance here, either from England or from the West Indies, that our viewers need to watch out for? I think Jofra Archer might be a player that might want to announce himself in this 3rd test match again, especially if he's bowling alongside Stuart Broad. I always believe that competition is healthy. He's such a big match player, Jofra Archer, and with the rest that he received by force in that 2nd test match, I just feel that he will have a point to prove. There is a bit of fire burning there from the criticism he received from bursting and jumping out of that bio bubble. So I think Jofra Archer might be a good pick. The next person I'd like to also mention is Craig Brathwaite on the part of the West Indies. This guy has shown that he's got some form. When he gets a start and he goes beyond 50, he can go on to score a century. You can just jog your mind to that 2017 test match. He scored a century as well alongside Shai Hoop. So I expect that he might be an outside pick right to the top and producing the goods for the West Indies with the bat in this 3rd test match. All right, just going forward, let me just remind our viewers that My 11 Circle में आपके पास 100 credit points available होते हैं और हर खिलाड़ी के सामने कुछ credit points होते हैं। जितना दिग्गज खिलाड़ी उतने ज़्यादा credit point, लेकिन 100 credit points में आपको टीम बनानी होगी। आपको 4 categories से खिलाड़ी चुनने हैं, जो बैट्समैन, ऑलराउंडर्स, विकेट कीपर्स और bowlers, और मैक्सिमम आप 7 प्लेयर ले सकते हैं एक टीम से। Okay, Darren, you gave us some of your tips. Let me just show you the top picks that we've picked here at ESPN Cricinfo. We'll start as usual with the captain and the vice captain. Captain हमने पिक किया है बेन स्टोक को, एक बार सुपरमैन स्टोक्स, और हमने कहा है आप उसको कैप्टन इसलिए बनाएं क्योंकि अगर आपने उन्होंने क्या किया इन 2 टेस्ट मैचेस में नहीं देखा तो आपको फिर आप शायद इस दुनिया में नहीं है, आप क्रिकेट ही नहीं देख रहे। ही इज बीन दैट आउटस्टैंडिंग, सो विदाउट डाउट आप उनको चुनिए। क्यों चुनिए हमको रीजन बताने की भी आपको जरूरत नहीं है। Vice captain, and this is where things get interesting, we have chosen Ruston Chase now. उन्होंने क्योंकि and I know who's really happy about it. Darren, I'll get your thoughts on that. Ruston Chase को हमने क्यों सेलेक्ट किया है? उन्होंने दोनों जगह आपको पॉइंट्स दिए हैं। वो बल्ले के साथ रन बनाते हैं, अगर मान लीजिए बल्ले के साथ रन नहीं बनाते तो गेंद के साथ वो विकेट ले लेते हैं, तो आपको पॉइंट्स वो देते ही रहेंगे। और खासतौर पर इंग्लैंड के खिलाफ बतौर गेंदबाज उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सो कीप एन आई आउट ऑन रस्टन चेज, मेक हिम योर वाइस कैप्टन, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। यू नो, उनके डुअल स्किल्स जिनके बारे में हमने बात की वो बहुत अहम हो जाते हैं। एक चीज हम आपको याद दिला दें फिर से कि कैप्टन जो आपका होता है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है, वो आपको 2 गुने पॉइंट्स देता है, डबल द पॉइंट्स। वाइस कैप्टन आपको 1.5 गुना ज्यादा पॉइंट्स देता है। तो कैप्टन, वाइस कैप्टन बहुत ध्यान से आप चुनेगा। Now we'll move on to the other top picks that we've got. We've got Joe Root this time. माना जो रूट का इतना अच्छा 2nd टेस्ट मैच नहीं गया था, पर हमें लग रहा है उन्होंने थोड़े से वो संकेत दिखाए थे। He was looking good at the crease. Looks like he will go and get you that big total, especially he stands up when the going gets tough, and बहुत important test match है। So we expect Joe Root to get you that big score and big points. Jofra Archer, Darren Ganga ने भी उनको पिक किया था। We've also picked up because he must surely be disappointed for having missed out on the 2nd test match. तो वो बहुत जोश में होंगे कि वो इस पिच पर अच्छी गेंदबाजी करें, आपको अंक दें। और हमने देखा था एंड ऑफ द 1st टेस्ट मैच उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की थी, गिव यू एन इंडिकेशन दैट ही इज गेटिंग बैक टू हिज टॉप फॉर्म। उसके अलावा हमने स्टुअर्ट ब्रॉड को चुना है। क्यों? एक तो वो कि 9 विकेट सिर्फ दूर है वो 500 विकेट से, तो ये उनके पास एक एडेड इंसेंटिव होगा 500
टेस्ट विकेट तक पहुंचने के लिए। उसके अलावा सिंगल हैंडेडली उन्होंने टेस्ट मैच, जो दूसरा टेस्ट मैच है वो पलट दिया था अपनी गेंदबाजी के साथ, 3 विकेट लिए उन 14 गेंदों में, तो ये भी बहुत अच्छे फॉर्म में है और हमें लगता है एक 5 विकेट हॉल उनसे अब ज्यादा दूर नहीं है। राइट Darren, how things change. Stuart Broad didn't make it to the team in the first test match. Now he's our top pick and will be a top pick for many people. I knew you were going to go in that direction. That's why I mentioned Craig Brathwaite and even Jofra Archer. I was not sure if you were going to go with him for the top picks. But again, I think you can sense players who are coming into form and players who will have a little extra pep in their step, so to speak, going into the third test match. So I agree completely with those top picks that you mentioned. All right, top picks are roughly the same for everyone because you know which are the good players, which are the players to watch out for. It's the value picks where things get very interesting because आपके पास choice बहुत है, आप किसी खिलाड़ी को चुन सकते हो। हमने जो 2 value picks करे हैं यहाँ पर, and this might surprise a lot of people, we've gone with Rory Burns. I know उनका अभी की सीरीज अच्छी नहीं गई है, but he had a fabulous Ashes series last year. जब से वो इंजरी से आए हैं, थोड़ा सा उनके soft dismissals हुए हैं, लेकिन उनके जो स्कोर है 30 और 42 और 15 इस सीरीज में, हमें लगता है कि वो डॉम सिबली को जब उन्होंने देखा ना रन बनाते हुए, उससे थोड़ा इंस्पायर होंगे। एंड अ सेंचुरी इज नॉट टू फार फ्रॉम रोरी बर्न्स इज हाउ वी सी इट हियर एट ESPN Cricinfo. सो उनको आप जरूर पिक करिएगा। शमार ब्रूक्स इज आवर अदर प्लेयर दैट वी हैव पिक्ड एंड दैट बिकॉज ही इज बीन एक्सीलेंट। दूसरे टेस्ट मैच में स्टैंड आउट बैट्समैन थे वो वेस्ट इंडीज के लिए, दोनों पारी में उन्होंने रन बनाए, कंट्रोल लगे, बाउंड्रीज भी लगाते हैं, क्रीज पे भी समय बिताते हैं। और ब्रूक्स के साथ उनकी जो बैटिंग है, हमें लगा 100 से ज्यादा दूर नहीं है, वो आ सकता है। Brathwaite, someone that Darren Ganga mentioned, along with him we think Brooks is the main man in form, so you should definitely pick him. Just quickly running you through our recommended 11, हमने किस-किस को चुना है। विकेट कीपर हम फिर डावरिच के साथ गए। Yes, he didn't have a great test match in the second test, but we've still gone with him. Our batsmen are Rory Burns, Dom Sibley the Centurion, we picked him, Joe Root and Brooks as I just mentioned. All-rounder में बेन स्टोक्स, जेसन होल्डर को हमने रखा है because we know he's such a class player. He can turn things around with ball. He's been doing it. It's just he needs to come good with the bat too. Roston Chase is our vice captain. As far as the bowlers are concerned, we've got Stuart Broad, Jofra Archer, and James Anderson. Darren, if our picks are anything to go by, it doesn't seem like it'll be a great match for the West Indies. I say that because we've picked 2 all-rounders, but no specialist West Indian bowler in our lineup. Yeah, I think you're right, and you're picking that based on form. You're picking that based on wear and tear, so to speak, because Shannon Gabriel, Kemar Roach, they've bowled a lot of overs for the West Indies in the previous 2 test matches, so chances are that you have some weary legs there. I also think what is also driving these picks is the fact that they're playing this 3rd test match in the same venue that we played the 2nd test match on. So cricket, and a lot of cricket has to do with the psychological side of the game. So players who would have performed in that 2nd test match will be walking into the 3rd test match in the same venue. And I understand the pitch is very similar to what we saw in that 2nd test match. So there shouldn't be any surprises there. Little or no grass. Fast bowlers will have a tough time getting wickets. From a West Indian point of view as well, that may prove to be a lot more challenging because they've relied a lot on their fast bowlers. Who knows? We might see Rakeem Cornwall. That's an outside pick you might want to consider. A guy who picked up 7 wickets, I think it was against Afghanistan. He's a virtual unknown. He's got a lot of ability. He's got a fair amount of size as well. But that is a guy that could surprise a lot of people with both bat and ball. I think Phil Simmons might be considering him because of the fact that it's back-to-back test matches on the same venue with little or no grass on that pitch. All right, Darren, that's a great tip for our viewers. Rakeem Cornwall, keep out an eye for him because he could just be the guy who's drafted into the team, especially when you're taking a look at the conditions. Darren, thanks so much for joining us with your thoughts and those tips. उम्मीद करते हैं ये tips आपके लिए भी बहुत फायदेमंद हो, आप अच्छी टीम को चुने। आप देख रहे थे My 11 Circle Fantasy Pick on ESPN Cricinfo.